Good morning, class. Welcome back in your English class. Today we will learn the uses of a and an in countable and uncountable nouns. How we will use a and an and the. Okay, so let's read. We cannot use a and an with uncountable nouns. Okay, so uncountable nouns होती हैं like we cannot count like a milk, sugar, water. We will not use a and an. Okay, so we cannot say a sand or a milk or a sugar. We can say a bag of sand, a bag or a cup of sugar. Usually things we buy come in containers. Use the words given in the words box to fill in the blank in mummy's shopping list. Underline the uncountables nouns. Now we have a key boxes here and we have some questions here. Firstly, we have to read the question and accordingly to the noun and uncountable noun, we will write here answer. A dash of toothpaste. A tube of toothpaste. क्योंकि toothpaste tube में होता है and that one is countable noun क्योंकि इसमें ए का यूज़ हुआ है और uncountable noun में हम आ का यूज़ नहीं करते हैं. A dash of milk. तो milk तो uncountable है but bottles are countable. Bottle are countable. A bottle of milk. A jar of jam. 3 bottles of mineral water. 12 cans of Coca-Cola. A curtain of sauce. Okay. Now fill in the blanks with the countable nouns given in the word box. We have to fill only the countable nouns. Okay. Which we can count. A tray of eggs. A box of biscuits. A can of chocolates, a sack of potatoes, a packet of chips, 2 bunches of cherries, a bag of beans, a vase of flowers. Now, countable nouns and uncountable nouns. The use of any and some in with plural countable nouns and any and some can be used with the uncountable nouns. तो उन्होंने कहा है any और some का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ कर सकते हैं जो कि नाउन्स प्लूरल होती हैं उसका ध्यान रखना है आपको एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्लू दैट वी यूज़ एनी एंड सम इन अ काउंटेबल नाउन्स विद प्लूरल फॉर्म. दे एट सम ग्रैप्स. तो ग्रैप्स देखिए काउंटेबल है और प्लूरल फॉर्म में ग्रैप्स तो उसमें हमने सम का यूज़ किया है. नाउ यूज़ एनी इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. अब एनी का यूज़ हम क्वेश्चन सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं. डिड दे ईट एनी एप्पल. They didn't eat any apple. Now, uncountable nouns. Any and some can be used with uncountable nouns also. They wanted some bread and milk. अब ये देखिए plural form में नहीं है लेकिन uncountable nouns है जो countable नहीं है तो ये अपने already अपने आप में ही plural form में है. So they wanted some bread and milk. यूज़ एनी इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. अब अनकाउंटेबल नाउन में एनी का यूज़ कैसे होता है क्वेश्चन सेंटेंस एंड नेगेटिव में. डिड दे हैव एनी शुगर विद द मिल्क एंड दे डिडंट हैव एनी शुगर. ओके, जब हमने आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी यूज हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम इन अ फर्स्ट in a sentence like when we start our sentence with the helping verb so it will convert into question mark, it will convert into question sentence. Okay, fill in the blanks with any and some. अब हमें fill in the blanks करना है any और some के साथ. Okay, he did not have any water so he bought some juice. Is there some tomato sauce with these chips? Do you have any spare color pencils? The teacher has written some sums on the blackboard. I can only do some of them. Ritu cannot do any of them. We didn't have any food last night. We did have some cookies and milk. Now, the use of a lot of and many in countable nouns and uncountable nouns. Yesterday, a lot and many with plural countable nouns and a lot of and much with the uncountable nouns. Yesterday there were many a lot of children in the park. इसमें हम many का यूज़ भी और lot of का यूज़ भी कर सकते हैं. And children also in a plural form. children plural form में होती है. तो use many with plural countable nouns in question and negative sentence. अब many का यूज़ हम plural countable nouns के साथ करेंगे question sentence में और negative sentence में. Are there many children in the park today?
देखिए आर मतलब इन्होंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ फर्स्ट पहले कर लिया है, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. देयर आर्ट मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क टुडे. नाउ नेक्स्ट वन इज देयर इज अ लॉट ऑफ फूड ऑन योर प्लेट. Use much with countable, uncountable nouns in questions in positive and negative sentences. There isn't much food on your plate. Finish it. Why is there so much food on your plate? There is so much food on your plate. Okay. Now use the correct word to complete the sentences. How much rice will we need to feed so many people? Okay. Now हाउ मैनी चिल्ड्रन आर कमिंग टू द पार्टी. क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर मैनी का यूज़ किया है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ ऑन योर स्टडी टेबल. वाई आर देयर सो मैनी थिंग्स ऑन द टेबल. हाउ मच आइस क्रीम डू यू थिंक वी विल नीड. वी विल नीड अ लॉट ऑफ आइस क्रीम फॉर सो मैनी पीपल. There are many mangoes on the tree. Last one, if you drink so much juice before dinner, you will not be able to eat anything. So complete this exercise of KOALA chapter and revise it.